ओके, सो लास्ट टाइम हमने डिक्शनरी का असाइनमेंट स्टार्ट किया था, राइट? एंड आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड 2 प्रॉब्लम्स इन इट. रिमूव द की तक हमारा हुआ था, राइट? रिमूविंग द email. Now we'll continue with dictionary, and then after that we'll see assignment on tuples, set, whatever things we have seen in the second unit. On everything we are going to see one assignment. Okay, so because Python is a programming language, you should have practical knowledge, and I have already told you many times, again I am telling, whenever we are doing programs here during the lecture, it is advised that you should do same programs on your end. It will be very beneficial for you. Okay, so we have completed the second problem. Today we'll start with the third problem, and in this third problem we are going to see various methods used on dictionaries. Okay, so first question here is, create a dictionary called inventory with the following key value pairs. Okay, so we have to create a dictionary with name inventory and these many items, these many elements in it. Okay, so let us create. I'll just copy this from here. So this is our problem 3. We have to create a dictionary. Inventory is equal to, how to create a dictionary? Yes, Curly bracket. curly bracket, right? So in curly brackets we'll give the elements. Okay, I just format them. Only 4 elements are there. Yes. Okay, so this is our dictionary inventory with 4 items, 4 key value pairs: apples 10, oranges 5, bananas 20, and grapes 15. Okay, now what is our next question? Use get method to access the value of the key apples. Okay, so using get method we have to access value stored in the key apples. Okay, now how to use that get method? Name of the dictionary, that is inventory dot get, and in bracket the key for which you want to access the value. Okay, apples. Now we'll print that. Print apples and inventory dot get apples. So it should print this value 10. Here you can see, because I have not comment out this, it is showing previous outputs as well. Okay, so here you can see apples 10. Using get method you can get the value. Okay, now next question, use the keys method to print all the keys in inventory dictionary. So if you want to get only keys from the dictionary, so for that we have keys method. So how to use that? Inventory dot keys. Okay, and I'll write here
print keys Okay, so all keys of the dictionary have been printed. That is apples, oranges, bananas, and grapes. These are the keys, and these are the values. Okay, so we have printed all the keys. So just like that, if you have to print the values, we can print like this only. Instead of keys, we'll write values. Okay, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम values. तो ये क्या करेगा? It will just print all the only values in the dictionary. Okay, so here you can see all the values 10, 5, 20, 15. And if you see, it is printing in the form of list. Okay, this is the list. List of keys, list of values. Okay, then use the items method to print all key value pairs in the inventory dictionary. Okay, just like keys and values, we can print all the items, and this items method is useful whenever you are iterating over the list. Means if you want to access one by one element from the list in the for loop, that time use this items method. Okay, there are multiple ways. Like if you want to print all the items in your list, you can just write print inventory. It will also give you all the items, but this is another way to print the items. Okay, so this will give you all key value pairs. Okay, so you can see, and this each key value pair is in the form of tuple. Okay, so it is list of tuples. This items is returning you list of tuples. Okay, and in every tuple there are two elements. One is key, another is value. Then use pop method to remove the key oranges and print the removed value. Okay, इसके पहले भी हमने delete करने के लिए एक method देखा था. To delete element from this dictionary, we can use this del and whatever element you want to delete. Okay, now another method to delete element from the list, from the dictionary is pop method. Okay, and what is feature of pop method? It will remove the element, and it will also return that removed element. We can store that return element in some variable. So how to use pop? Inventory dot pop, and in bracket you can give whatever key of the element that you want to pop. Okay, so we have to delete this oranges, so I'll write here oranges. Okay, and then this removed value you can store in a variable. So removed value, because pop will return you that value, and then we'll print removed oranges. It will give you the value of that orange, whatever value we have removed. Okay, so let us execute this. So here you can see removed oranges and this 5. So we have removed oranges. So oranges is a key. So that value is deleted. That is why it has written 5. Value 5. Okay. Then next operation we want to perform on dictionary is use the clear method to remove all items from the inventory dictionary and print the empty dictionary. Okay. So we just have to use clear method on the dictionary. So simply we'll write inventory dot clear, and then we can print clear dictionary
inventory. Okay, we have just cleared it. We have not removed the dictionary. Cleared means we want to delete all the elements from the dictionary. So here you can see the cleared dictionary. It is empty dictionary with no values. Okay. Any doubt in dictionary? We have completed with the assignment on dictionary. Is there any doubt? Very simple methods are there, but you have to remember them because not every time you will get which method to use. Okay. So if someone asks you how to access value of any particular key in the dictionary, so you should know using get method we can access, or we can give that key in the square bracket and we can get that value. Okay. Here, just for your understanding, I have given all the methods so that you should understand there can be different methods to perform the same operation. But you have to remember all these methods. Is there any doubt in this? Yes. No, ma'am. No? Just a second. Okay. Now let us move to the next assignment. Yes. मैम जब हम मैम जब हम ये डिक्शनरी मैम क्लियर कर देंगे पूरी और तो उसका मैम साइज जो रहेगा मैम वो कितना रहेगा पता है क्या? एक मिनट. क्या पूछ रहे हो? मैम जैसे हम क्लियर लगा देते हैं तो मैम हाँ. जब हम क्लियर करते हैं तो जो एम्प्टी डिक्शनरी होती है मैम उसका हाँ. कुछ ना कुछ होता है क्या? साइज. जी मैम एम्प्टी डिक्शनरी जो हाँ. रहेगी मैम उसका कुछ साइज साइज होगा क्या? जीरो. ओके. साइज कैसे हम साइज कैसे हम निकालते हैं कोई भी कलेक्शन का यूजिंग लेंथ फंक्शन, राइट? तो जी यहाँ पे मैम। हम प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट लेंथ आफ्टर क्लियर. ओके. और यहाँ पे लिखेंगे जीरो लेंथ ऑफ inventory. Okay, so this will give you size of the dictionary after clearing it. Okay, so here you can get the size which is 0 because there are no elements. ओके Got it? यस मैम। मैम Hmm. साइज मैम बिट वाइट मैम उस मेमोरी में Sorry, मेमोरी में भी speak loudly. मैम मेमोरी साइज जो रहेगा वो भी जीरो रहेगा मैम। Yes, because हमने सारे elements निकाल दिए, अभी तो कोई elements ही नहीं है dictionary में. So we ओके have मैम। released the memory. जी मैम। Okay. जी मैम। ठीक. Okay, let us move to the next assignment. It is assignment on tuples. I think I have not updated the number. String was the first, list was the second assignment, dictionary was the third assignment, and now we are going forward to fourth assignment, that is assignments on tuple. Okay, so what is tuple? Do you remember? We have already seen tuple in very much detail. Yes, किसी को याद है? What is tuple? स्टोर मल्टीपल वैल्यू मैम ब्रैकेट। It can store multiple values, but what are features of tuple? How do we define the tuple? Which bracket is used? स्क्वायर सॉरी राउंड ब्रैकेट। Round brackets, right? List यस के मैम। लिए हम यूज करते हैं. इसका I'll write here. List के लिए यूज करते हैं हम square brackets, इस right? Dictionary के लिए कर ली curly brackets. Now for tuple we use राउंड ब्रैकेट्स। round brackets.
एंड वन मोर कलेक्शन वी हैव दैट इज सेट। सेट के लिए हम यूज करते हैं, यस, सेट के लिए क्या यूज करते हैं पता है? सेट के लिए भी हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ठीक है, कीप इन माइंड दिस। ओके, नाउ व्हाट आर फीचर्स ऑफ टपल? टपल के फीचर्स क्या है? When we say features, see, you have to talk in terms of ordered, mutable, जो हम तीन फीचर एवरी कलेक्शन के लिए देखते हैं। कोई भी कलेक्शन है, एक उसमें तीन फीचर्स होते हैं। एक तो ऑर्डर होता है नहीं होता है, ऑर्डर है या नहीं, राइट, म्यूटेबल है या नहीं, देखा है हमने, देखा है या नहीं देखा, ये सारे कलेक्शंस हमने देखे हैं। सेकेंड यूनिट में वी हैव सीन ऑल द कलेक्शंस। Just a second. Okay. We have already seen all these collections. List, dictionary, tuple, set. देखे ना? लिस्ट ऑर्डर होता है या नहीं होता है? ओके, अभी टपल के बारे में बताऊंगी। ऑर्डर्ड मतलब कैन वी एक्सेस इट यूजिंग इंडेक्स और नॉट? Yes, ma'am. Order. ऑर्डर्ड, राइट। म्यूटेबल होता है? Yes, ma'am. व्हाट इज म्यूटेबल? म्यूटेबल मतलब Ma'am, we can modify, ma'am. Digits नहीं कर, modify नहीं कर। we can modify, राइट। तो टपल हम मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? टपल्स आर इम्यूटेबल, ठीक है। ओके, हम मैं यहाँ पे फीचर लिखती हूँ जस्ट फॉर रिवीजन। ओके, लिस्ट से हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी कलेक्शन के बारे में आपको थ्री फीचर्स के बारे में बताना है, इंडेक्स्ड और ऑर्डर्ड, म्यूटेबल, म्यूटेबल, इम्यूटेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट्स और नॉट। ओके, तो लिस्ट इंडेक्स्ड होती है या नहीं होती है? व्हाट अबाउट लिस्ट? ऑर्डर्ड या इंडेक्स्ड होती है? Yes, ma'am. Yes, lists are indexed. Then mutable, immutable, Mutable. mutable. And Duplicate value allow duplicate, करता हूँ। allow duplicates or not? Yes, ma'am. Yes. Okay, allow duplicates. Okay. Now what about dictionary? Dictionary duplicate value नहीं allow. Dictionary indexed Ordered होती है होता नहीं है। होती है? Ma'am, ordered, immutable, and allowed duplicate value. सेम फीचर्स है। Allowed duplicate value allow नहीं करता डिक्शनरी, dictionary में। सी अभी हमने डिक्शनरी का पूरा असाइनमेंट देखा। डिक्शनरी में कहीं पे भी हमने देखा कि डिक्शनरी आप इंडेक्स यूज करके एक्सेस कर रहे हो। डिक्शनरी के एलिमेंट्स हम किससे एक्सेस करते हैं? यूजिंग कीज, राइट। या यहाँ पे आपने देखा कहाँ पे हमने यूज किया? इन्वेंट्री ऑफ जीरो, इन्वेंट्री ऑफ वन यूज किया है हमने? No, ma'am. नहीं किया है। सो लिस्ट, सॉरी, डिक्शनरीज आर अनइंडेक्स्ड। डिक्शनरी को इंडेक्स कब कहते हैं हम? जब हम उसको नंबर से या इंडेक्स यूज करके एक्सेस करें एलिमेंट्स को। तो डिक्शनरी को तो हम इंडेक्स यूज करके एक्सेस नहीं कर सकते, डिक्शनरी के एलिमेंट्स। सो इट इज अनइंडेक्स्ड, राइट। नाउ म्यूटेबल Yes, ma'am. इम्यूटेबल। Immutable. इम्यूटेबल Yes, ma'am. या म्यूटेबल? Mutable. म्यूटेबल, क्योंकि इसके
पहले ही असाइनमेंट में हम प्रॉब्लम में हमने देखा था कि हम लिस्ट के एलिमेंट्स चेंज कर सकते हैं, राइट? सो लिस्ट्स आर म्यूटेबल एंड लिस्ट्स अलाउ डुप्लीकेट्स और नॉट, सॉरी, डिक्शनरीज अलाउ डुप्लीकेट्स और नॉट। नो नो मैम। नो, देखा आपने चेक करके? प्रॉपर्टीज में तो बताया था आपने कि डुप्लीकेट अलाउ नहीं कर सकते। यस, एनीवन? Ma'am, we cannot change key value. कैन नॉट चेंज की वैल्यू मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या पूछ रहे हैं आप या कुछ बता रहे हो? Ma'am, फिर से क्वेश्चन क्या था? मैं पूछ रही हूँ कि डिक्शनरी में डुप्लीकेट अलाउ है या नहीं है? नहीं है मैम। यस, एवरीवन? नॉट अलाउ मैम। नॉट अलाउ मैम। नो duplicates. Now tell me about tuple. Tuple are indexed or इंडेक्स्ड मैम, ऑर्डर्ड। unordered, right? Tuples are, I am purposefully writing here indexed because index से समझ में आता है कि tuple के एलिमेंट्स को हम इंडेक्स यूज करके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो टपल्स आर इंडेक्स्ड, म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है? इम्यूटेबल। इम्यूटेबल, वेरी गुड। Tuples are immutable and allow duplicate elements or not? यस मैम, अलाउ। Yes, They ma'am. allow duplicates. Okay. Now sets. सेट का क्या है? इंडेक्स्ड है, On index, ma'am. अनइंडेक्स्ड है, राइट? अनइंडेक्स्ड, देन sets are Immutable. sets are mutable. We can change elements in the state. Change means you can add and remove. You cannot modify. Okay, got it? म्यूटेबल के ब्रैकेट में मैं लिखती हूँ एड, रिमूव, बट कैन नॉट मॉडिफाई, ओके? एंड अलाउ डुप्लीकेट्स आर नॉट, सेट्स तो आपने स्कूल से पढ़े होंगे, सेट में कभी भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं रहते, सो सेट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स, ओके? तो ये इतना आपको याद रखना है। अगर आप ये कीवर्ड सिर्फ याद रखोगे तो एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आता है ये कलेक्शन के ऊपर तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे विद एग्जाम्पल, राइट? ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू विद अवर असाइनमेंट ऑन टपल। तो असाइनमेंट में क्या है? क्रिएट अ टपल कॉल स्टूडेंट विद फॉलोइंग एलिमेंट्स एलिस 21 BCA, ओके? तो हमें एक टपल क्रिएट करना है स्टूडेंट नाम का, स्टूडेंट इक्वल टू, जैसे टपल हम क्रिएट करते हैं राउंड ब्रैकेट से, तो इन राउंड ब्रैकेट विल गिव एलिस 21 BCA, ओके? टपल में हम अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, वैसे लिस्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है? तो एलिस 21 BCA, दिस इज अवर टपल, ओके? नाउ व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन?
ओके, मैं ये क्वेश्चंस यहाँ पे कॉपी पेस्ट करती हूँ, मतलब स्विच नहीं करना पड़ेगा। Okay, what is next question? Print the student tuple. So this is very simple. Print student tuple और यहाँ पे हम देंगे student. Okay. Then next question. एक ही बार हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे पूरा. ठीक है. Next question. Access and print the first element of the student tuple. Okay. So अभी हमने देखा tuples are indexed. So how to access first element? Yes. Print first element. How to access first element? Student 0. Student in square bracket 0. Okay, this is how we use indexing. Now if I want to print length, how to print length? एलियन Alien or ब्रैकेट में स्टूडेंट in bracket स्टूडेंट student. Okay. इसमें Now if I want to print last element, see here the next question is print last element of the student tuple. So how to print last element? Last element. लास्ट एलिमेंट प्रिंट करने के दो वेज हो सकते हैं हमारे पास. ओके, यू कैन टेल मी एनी वे. Length मैम minus 1. फर्स्ट ओके, स्टूडेंट ऑफ, ये हमने स्टोर नहीं किया है इसलिए हमें ये यहाँ पे ऐसे लेना पड़ेगा. लेंथ ऑफ स्टूडेंट माइनस 1. ओके, और क्या वे हो सकता है लास्ट स्टूडेंट प्रिंट करने का? यस. Index name हाँ, क्या इंडेक्स देंगे? लास्ट स्टूडेंट के लिए इंडेक्स क्या देंगे? 2. 2. काउंट करोगे यहाँ पे 0 1 2 ऐसे. और आपके पास अगर टपल में बहुत सारे एलिमेंट्स है कि जो आप काउंट नहीं कर सकते तो ओके, टेल यू. ये मैंने बहुत बार बताया आपको, मुझे लगा आप बताओगे. सिर्फ स्टूडेंट ऑफ -1 लिख दो. राइट, -1 लिखोगे तो लास्ट एलिमेंट एक्सेस होता है. दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ पाइथन कि आपका कोड बहुत शॉर्ट कर देता है. लेंथ ऑफ स्टूडेंट -1 लिखने की भी आपको जरूरत नहीं है. You just write -1, it will access last element. 0 means first element, -1 last element. Right? 1 means second element, या फिर -2 लिखोगे तो लास्ट से सेकेंड एलिमेंट एक्सेस होगा. Got it? -1 यस से मैम एक्सेस कर सकते हैं हम लास्ट एलिमेंट. राइट. नाउ इतना हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं. ओके, सो जस्ट अ मिनट, मैं इनको कमेंट कर देती हूँ. डिक्शनरी कर लें इसको. ओके, यहाँ पे हमारा आउटपुट स्टूडेंट टपल सबसे पहले हमने प्रिंट किया. ठीक है. देन वी हैव प्रिंटेड फर्स्ट एलिमेंट using index.
Then last element using len, right? Length है हमारे list का 3, last element using len and last element using index. So this is the output. Got it? Yes, ma'am. Okay. Now next question is create a nested tuple called grades with the following structure. Nested means we now have to create tuple inside a tuple. That is called as nested tuple. So nested tuple called grades with the following structure. So we have to create a tuple like this in which elements will be math 85, science 90, English 88. और ये जो है वो क्या है nested tuple because this is one tuple and inside this tuple there are 3 more tuples. Okay, so this is called as nested tuple. So we'll create that. Grades is equal to नेस्टेड टपल ऐसे क्रिएट करना है पहले तो टपल इसके अंदर फिर से हम टपल बनाएंगे लाइक दिस. ओके, मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ. ओके, दिस इज नेस्टेड टपल. And the last question from this problem is access and print the grade for science from the nested tuple grades. Okay, अभी हमें इसमें से क्या करना है? We just have to print the grade for science. What is grade for science? What is grade for 90, science? ma'am. 90, right? Yes, ma'am. So you just have to print the 90. How will you print that? Name of the tuple, grades, then yes, any idea? How to access elements of tuple using index? कैसे access करते हैं हम? Square bracket में index, right? तो इसका index कितना है? Science और 90 का. Yes, what is index for this tuple? This element 1. 1. तो यहाँ पे अगर हम 1 लिखेंगे तो क्या प्रिंट होगा? प्रिंट क्या प्रिंट होगा इससे? 90. सी, इससे क्या प्रिंट होता है? साइंस कॉमा 90 बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रेड्स टपल, राइट? दिस इज द 0th एलिमेंट, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट. बट हमें क्या प्रिंट करना है? सिर्फ 90 प्रिंट करना है. तो कैसे प्रिंट करोगे? ग्रेड्स ऑफ 1 से ये टपल एक्सेस हो गया, राइट? इस टपल में 90 का इंडेक्स क्या है? यस, ये जो अंदर का टपल है, ये जो नेस्टेड टपल है, इसमें ये 90 है, इसका इंडेक्स क्या है? 1. 1, राइट? तो इसके आगे और एक स्क्वायर ब्रैकेट देखे हम लिखेंगे ग्रेड्स ऑफ 1 1. ओके, यहाँ पे एक मैसेज देते हैं तो समझ में आएगा. साइंस ग्रेड्स. ओके, साइंस ग्रेड भी एग्जीक्यूट करते हैं. सी, अभी हमें क्या मिला? सिर्फ 90. ओके, तो नेस्टेड है आपके पास कुछ, तो नेस्टेड भी आप स्क्वायर ब्रैकेट में मल्टीपल इंडेक्स देके एक्सेस कर सकते हो. एनी डाउट इन दिस फर्स्ट प्रॉब्लम? No, ma'am. नाउ सेकेंड प्रॉब्लम इज अबाउट टपल मेथड्स. ओके, तो अभी मैं ये कॉपी करती हूँ.
इसमें हमें टपल्स के जो मेथड्स है वो यूज करने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज क्रिएट अ टपल कॉल्ड fruits with the following elements. These elements we want in our tuple. Okay, all these are fruits. तो अभी हमने देखा टपल में डुप्लीकेट्स अलाउड है, राइट। तो ये जो आप फ्रूट का टपल हम बनाने वाले हैं, इसमें भी क्या है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स आप देख सकते हैं। एप्पल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ओके, तो हम चेक करते हैं कि टपल डुप्लीकेट्स अलाउ करता है या नहीं करता, ठीक है। सो fruits equal to, in round bracket, will give all the elements. Okay, we are not getting any red line, so there is no error. That means tuple allows duplicates. Okay, now second, use count method to count number of times apple appear in the fruit tuple. क्या करना है अभी हमें कि हमारे टपल में कितने बार एप्पल ये एलिमेंट आया है वो काउंट करना है, राइट। कितनी बार आया है हमारे टपल में, 1, 2 and 3 times. Okay, so how to count that? Simple, we have a count function for that, fruits dot count, and in bracket जो भी आपको एलिमेंट काउंट करना है वो यहाँ पे देना है, ठीक है। सो वी वांट टू काउंट एप्पल, number of apples, so I'll write count in bracket apple. Okay, we'll give some message, print count of apple. Okay, let's execute this. I'll just comment out this one. Okay, so see here, count of apple is 3. So this is how you can count a particular item in the tuple. Okay, next use the index method to find first occurrence of cherry in the fruits apple. Now what we have to do, we want to find चेरी कौन से इंडेक्स पे अपीयर हुआ है टपल में, राइट। तो कैन एनीवन टेल व्हाट इज फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ चेरी? 2 में। 2, right? 0, 1 and 2. 0, 1, 2. So it should print, we need output 2. Okay, लेकिन ये कौन सा फंक्शन यूज करना है यहाँ पे हमें, इंडेक्स। सो सिंपल, जैसे हमने काउंट किया वैसे ही fruits dot index and in bracket element. Okay, so we want to see in index of cherry. So here we write print first occurrence of cherry. Let's execute this. So here you can see first occurrence of cherry is 2, right? Then next question, use tuple concatenation to combine the student and grades tuples created in problem 1 and print the result. ओके, तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट का टपल बनाया था, राइट। ये जो था एलिस, इसको हम अनकमेंट कर देते हैं। तो ये था हमारा स्टूडेंट का टपल, और उसके बाद हमने बनाया था एक ग्रेड का टपल, राइट। नाउ व्हाट वी वांट टू डू हियर, use tuple concatenation to combine student and grades tuple. Concatenation means
What do you mean by concatenation? To join, ma'am. Join, right? Or combine. So we need to combine here student and grades. So it's very simple. You just have to write student plus grades. Okay. And we'll save this in some variable combined equal to student plus grades. Okay. And now प्रिंट करते हैं हम यहाँ पे कंबाइन टपल. ओके और यहाँ पे प्रिंट करेंगे कंबाइन. ओके नाउ लेट्स सी स्टूडेंट और ग्रेड कंबाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे. ओके सी हियर कंबाइन टपल. सो दिस इज स्टूडेंट. दिस वाज डेटा फ्रॉम स्टूडेंट टपल एंड उसके बाद क्या आ गया grade. Okay, so this every subject with its mark is a tuple. Okay, so this combined tuple is a tuple which contains few individual elements and few tuples as elements. Got it? Yes, ma'am. Any doubt in tuple? No, ma'am. No? Okay. Okay, only one problem is there in tuple. We'll complete this problem and then we will stop. Okay, तो ये tuple का असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, सिंपल है. Now problem third in tuple is tuple operations. Okay, so here the first question is create two tuples A and B with elements 1 2 3 and 4 5 6 respectively. So we have to create two tuples A and B. Okay, A में elements चाहिए हमें 1 2 3 और B में चाहिए elements 4 5 6. हो गए दो tuple create, right? Now concatenate A and B and print the result. Now you tell me how to concatenate. How to concatenate? Ma'am, take any variable and We have after already taken two variables, right? A and B. Now I want to combine these two tuples. How to A combine? A plus B. plus B, right? Okay. So for this, we'll print the result. Print concatenated. Okay. Then next is repeat tuple 3 times and print the result. Okay. टपल के लिए ये भी बहुत सिंपल है. अगर टपल पे क्या करना है हमें रिपीट टपल 3 times. इट्स वेरी सिंपल. ओके आई शो यू टपल रिपीट कैसे करते हैं. रिपीटेड इज इक्वल टू a star 3. So when you perform a star 3, that tuple will be repeated 3 times. Okay. So let's see that. Print repeated and repeated. Okay. तो अभी हम देखेंगे कि ये कैसे रिपीट होता है. So here you can see repeated 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Got it? Very simple. Now next operation हमें perform करना है. Use tuple slicing to print the first two elements of concatenated tuple. So we have this concatenated tuple. इसके ऊपर हमें क्या operation perform करना है? Slicing. Okay. और कौन सा slice चाहिए हमें? Slice to print the first two elements. Okay.
Now tell me how to print first two elements. स्लाइसिंग कैसे यूज करते हैं हम इन स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट टू एलिमेंट्स. यस एनीवन. जल्दी बताओ. फर्स्ट टू एलिमेंट्स. कैसे स्लाइसिंग करते हैं कोई भी कलेक्शन पे. यस टेल मी. अगर आपने नहीं बताया तो मैं ये छोड़ दूंगी क्वेश्चन. पता है आपको स्लाइसिंग कैसे होती है. आई जस्ट वांट टू एक्सेस फर्स्ट टू एलिमेंट्स ऑफ द टपल. हाउ टू एक्सेस फर्स्ट टू एलिमेंट्स. नहीं पता है किसी को भी. रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। रिकॉल नहीं कर पा रहे. 0:2 राइट. ये क्या करता है. 0 से लेकर 2-1 तक एलिमेंट्स आपको स्लाइस करके देगा. मतलब 0th एलिमेंट आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा. ठीक है. और एक बात इसमें अगर आपको कोई भी कलेक्शन शुरू से रीड करना है बिगिनिंग से रीड करना है तो आप ये 0 स्किप कर सकते हो. मतलब सिर्फ आपने :2 दिया तो भी वो फर्स्ट टू एलिमेंट्स प्रिंट करेगा. ठीक है. मैं आपको बताती हूँ. प्रिंट फर्स्ट टू एलिमेंट्स. और ये जो कॉन्केटिनेटेड है इससे हमें फर्स्ट टू एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं. ठीक है. तो कौन से भी टपल से आप प्रिंट कर सकते हो लेकिन हम ये कॉन्केटिनेटेड टपल से प्रिंट कर रहे हैं. ठीक है. तो फर्स्ट टू एलिमेंट यू कैन सी 1 and 2. ओके. कॉन्केटिनेटेड ये है हमारा. इसमें से फर्स्ट टू एलिमेंट्स हमने प्रिंट कर दिए. अभी मैं इसमें से 0 निकाल देती हूँ फिर भी आउटपुट सेम ही मिलेगा आपको. So whenever you want to read any collection from beginning, you can just keep the 0. बस क्या देना है आपको :2. It will give you first two elements. Okay. Now how to access last two elements? Last two elements कैसे access करोगे? Yes, any idea? लास्ट टाइम भी मैंने आपको लिस्ट के लिए भी बताया है. डिक्शनरी के लिए सॉरी लिस्ट के लिए मैंने बताया आपको कि लास्ट एलिमेंट कैसे एक्सेस करना है. ठीक है. डिक्शनरी में तो हम नहीं कर सकते इंडेक्स से लेकिन लिस्ट में हमने देखा है डेफिनेटली कि लास्ट एलिमेंट कैसे एक्सेस करना मैम माइनस में माइनस देखिए मैम. है. राइट. वेरी गुड. -2 -2। और कोलन. ठीक है. तो इससे क्या होता है. इससे क्या होते हैं लास्ट टू एलिमेंट्स हमें मिल जाते हैं. प्रिंट लास्ट टू एलिमेंट्स. Okay, let's execute this. See last two elements. ये concatenated में last two elements कौन से हैं 5 and 6. So ये हमें इसमें मिल गया. Any doubt in this? नो मैम। नो मैम. Okay, तो ये सिर्फ इस क्वेश्चन में बताया था. लास्ट टू एलिमेंट्स फ्रॉम रिपीटेड टपल. तो मैं यहाँ पे ये निकाल के रिपीटेड लगा देती हूँ. आंसर करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. Okay. So with this we will stop here. We will continue in the next lecture. Okay. Thank you. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम.